Hello dear students, welcome to my channel Tech Krish, and I'm going to tell you about the files in Python. So what are the files and what is the need of the files? So there is a presentation for you. So we are moving towards the presentation. So what is a file? File basically when you create any program, when you draft any document on computer, then when you uh, work on Excel, when you work on Google Sheets, when you work on Google Docs or any other software. So whatever you create, say you are creating the agenda, or you are creating the list of the programs, list of the grocery. So you write it somewhere on computer. Maybe this could be the notepad, this could be Google Keep, this could be Google Docs. And after writing the list, making the list, you save this list to the system. And when you save this list to the system, then you realize that you give a permanent name to this program. This is basically the content. The content which you have created using Google Docs or Google Keep, MS Word, Notepad, you save it for future use. So you will have to give a name so that आपको ये ध्यान रहे कि कोई प्रोग्राम या लिस्ट जो आपने बनाई है किस नाम से बनाई है। जब आप इसको सेव कर देते हैं, बिकॉज जहां आप सेव करते हैं दैट मीडिया इज नॉन वोलेटाइल, मीन्स उस पर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएगा और जब भी आप चाहेंगे उसको देख सकते हैं। सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस what is a file. So file is a sequence of bytes on the disk oblique permanent storage where a group of related data are stored. File is created for permanent storage of data. In programming, sometimes it is not enough to only display the data on to the console. Means if you write the program, means if you have the task, you are uh, learning a programming from very scratch. Then usually what you do, you write the program and get the result, and you forget, and you do not save it. When you do not save this program onto the disk, it means the program was previously stored in random access memory. And random access memory is a volatile memory. So whatever you save in RAM, it goes off when you change the program or you switch off the system or uh, shut down the system. And when you load the system again, your system's RAM is clear, blank. So to save the information, to save the program, we will have to transfer the data or transfer the program which is in the RAM onto the non-volatile system, non-volatile storage medium. So that the data, those data whichever you have saved onto the storage media, that data are to be retrieved later on, because this is the non-volatile storage medium. Then the concept of file handling comes, because this is the list. You have created a list of grocery, you have created your poem, you have created a letter. एंड लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यू विल हैव टू प्रोसेस द डेटा में, प्रोसेस डेटा मींस द डेटा कुड बी ऑफ एग्जाम डेटा, कुड बी ऑफ योर एग्जाम डेटा, द डेटा कुड बी द एम्प्लॉयज सैलरी डेटा। तो ये डेटा जो है हमें किसी न किसी तरीके से ये लीड करता है कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कि हम इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकें, एंड ये डेटा हमें बार बार यूज करना पड़ सकता है और हम ये चाहते हैं डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो। तो इस टाइम पर जो डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें चाहिए फाइल, ताकि हम इस डेटा को बाद में रिट्रीव कर सकें और यूज कर सकें। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम आता है फाइल हैंडलिंग का। इट इज इम्पॉसिबल टू रिकवर द प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड डेटा अगेन एंड अगेन। एक बार जो आपने प्रोग्राम बना लिया, उस प्रोग्राम को दोबारा से बनाना, बार बार बनाना, ये इतना पॉसिबल नहीं है।
प्रोग्राम एक बार बन गया तो डेली नहीं बनाया जा सकता, या हर 2 पल में नहीं बनाया जा सकता, या बार बार नहीं बनाया जा सकता। तो एक बार आपने प्रोग्राम बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया, रन करके देख लिया, अब प्रोग्राम अगर सही है तो आपने उसको सेव करा लिया। अब ये सेव हो सिस्टम में सेव हो गया, उसके बाद आप कहीं भी यूज उसको कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। However, if we need to do so, we may store it onto the file system। जैसा कि मैंने बोला कि जो डेटा आप यूज करना चाहते हैं तो उसको आपने फाइल में स्टोर करना पड़ेगा, which is not volatile। यानी मेमोरी में यानी जो डिस्क है उसमें आपको सेव करना पड़ेगा, because this is non volatile। यानी इसमें आप जो डेटा आप देंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएगा और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। सो दिस इज दिस कम्स this gives the need of the file system. Since we are doing Python, so in Python there is also a file system, file handling. So under this file handling, we'll study different type files. File handling in Python enables us to create, update, read, and delete the file stored onto the file system through our Python program. So, the kind of files, किस कितने कितने टाइप की फाइल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सो ये भी हमें यहाँ पर देखना है। सो एज यू नो, वी राइट द प्रोग्राम एंड सेव इट into our computer for future use, because we avoid making the same program again and again if it is required. This saved version of program is known as a file. Likewise, when it is required to save our data for future use or for any processing, you need to save this data onto a file. In Python, the data is stored in the form of bytes onto the storage medium, and it is given an appropriate name. Hence, this data is saved into the file using the program can be created by the file handling. In the same way, Python allows us to create the files in the following manner or following formats, like text files, binary files, and CSV files. So what are these files? We'll study about these three formats of files. So first is text file. So what is text file? A text file is a file in which the data is stored in ASCII format or Unicode characters. So this is a text file. Each line of text is terminated by a special character known as EOL, end of line. Third point, the extension of the text file is usually .txt. This is the default mode of file. So these are the characteristics of a file, but on the other hand, we have binary files also. So what are the binary files? It stores information in the same format as stored in the memory, because whatever you give to the system, the computer does not understand your language. So it requires the data in its own native language. So its native language is binary. So whatever you give to the computer, it is stored in the RAM, but not not in that format in which you have entered. It requires its own format. So we need some interpreter or compiler जो कि इसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और फिर ये जाकर के मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं. There is no delimiter in line as in text file EOL is attached. टेक्स्ट फाइल में हर एक लाइन के बाद आपको एंड ऑफ लाइन अटैच करना होता है, मे बी एंटर, बैकस्लैश r, whatever, या बैकस्लैश n. लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं है. बाइनरी फाइल का जो डेटा है एक लाइन का लंबा डेटा हो सकता है और या हो सकता है कि छोटा डेटा भी हो जो कि एक लाइन का भी ना हो. ट्रांसलेशन ऑफ डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इसका जो सिस्टम ही ये है कि वो आपकी हिंदी, इंग्लिश और जो भाषा आप देना चाहते हो वो नहीं समझता. तो इसके लिए जो है मशीन कंपैटिबल लैंग्वेज होना जरूरी है. इसके लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो ये काम करते हैं और उसको मशीन कंपैटिबल करके या मशीन कोड्स में ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूटर को दे देते हैं. दिस इज मोर सिक्योर वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. जो बाइनरी सिस्टम है वो द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. Now we are going to discuss the difference between the text file and the binary files. So in text file, the information is stored in ASCII or Unicode characters, whereas in binary, the information is stored in the same format in which it is stored in the memory. That is binary format.
this is not human readable. So binary format or binary codes are not human readable, like ऑडियो फाइल और या फिर वीडियो फाइल या इमेज फाइल है, ये आसानी से इंसान नहीं पढ़ सकता. On the second point, each line of text file is terminated by a special character known as EOL, whereas in binary file there is no delimiter as such. Humans can read the text file easily without any translators, whereas binary files codes are not readable by the humans easily. Text files are slower than the binary files, slower in process and occupy more space in a storage medium, because if you want to save like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so if there are 10 digits you want to store in text file mode, it will occupy 10 bytes, because one character occupies 1 byte. So if there are 10 digits, then it will occupy 10 bytes. Whereas binary files are faster in processing. Why? If you want to save the integer and binary mode like 1 2 3 4 5, so there are 5 digits. So integer occupies 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes. सो जितना बड़ा डेटा होगा, लेकिन ये डेटा इंटीजर का इन्हीं टाइप्स में एकोमोडेट होना होगा. 2 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, जैसे कि 2 बाइट्स में -32768 से लेकर के +32767 तक सेव हो सकता है. तो इसमें 5 डिजिट्स ऑलरेडी है एंड इट रिक्वायर्स ओनली 2 बाइट्स. इससे बड़ा डेटा होगा तो इट रिक्वायर्स 4 बाइट्स. सो बाइनरी सिस्टम में इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस. टेक्स्ट फाइल्स हैव एक्सटेंशन .txt. अगर टेक्स्ट फाइल की बात करें तो इसका एक्सटेंशन .txt होता है. द बाइनरी फाइल्स हैव एक्सटेंशन यूजुअली .dat, बिकॉज इसमें नॉर्मली डेटा होता है और जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, तो इसका एक्सटेंशन .dat ही होता है यूजुअली. ओके, द नेक्स्ट इज कि हाउ टू ओपन द टेक्स्ट फाइल. Opening a text file. So to open a text file, this is syntax. File object is equal to open file name. तो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं कि जो फाइल नेम है, this file name is created onto the storage medium, and this is the function. This will open this file, and the file will be represented by the variable file object. So this variable will represent this file which is on to the disk. So हम इस फाइल को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा जो कि इस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा. दूसरा मेथड है कि फाइल वेरिएबल फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, देन देयर आर टू वर्ड्स लाइक फाइल नेम एंड मोड. फाइल नेम का मतलब जो यहाँ पर है, और यहाँ पर का मतलब भी फाइल नेम है, लेकिन मोड यहाँ पर नया वर्ड है. मोड का मतलब है कि आप इस फाइल को किस लिए ओपन कर रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं या फिर रीड करने जा रहे हैं, या जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें कुछ और ऐड करने जा रहे हैं. तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ तो मोड है लेकिन यहाँ क्यों नहीं है. इसका मतलब ये है कि इफ यू क्रिएट द फाइल, इफ यू ओपन द फाइल विदाउट एनी मोड, it means the file will be opened in read mode. The default mode is read mode. Okay, and over here this is the file object and this is file name with path. File name with path मतलब जहां पर भी आपने डेटा अपनी फाइल को सेव किया है वो पूरा पाथ चाहिए. जैसे सी ड्राइव के अंदर पाइथन 3 में आपने कोई डेटा फाइल सेव किया है तो उसका पाथ हो जाएगा C:\/ python 3 \file name. This is the absolute path of the file, and mode may be whatever you use. W for write mode, R for read mode, A for append mode. So hope you understood the concept of the file, and in the next video we'll do some hands on the file, how to create the file, how to read the file, and what are the modes, read, write and append, and if what happens when you omit the mode. As I have said that if you omit the mode, it will open the file in read mode. So hope you
understood the concept, whatever I have taught to you till this slide. And if you have any problem, kindly write to me and I'll try to give the solution. And moreover, if you like this video, kindly share it with your friends and subscribe the channel and like the video. Thank you and bye bye.